Okay, fine. Let's start. So last class में we are talking about Venn diagrams. हमने I guess Venn diagrams चालू कर दिए थे. And solving some other numericals related to Venn diagrams. Now Venn diagrams की जब भी बात आती है, so Venn diagrams are part of both general aptitude and verbal listening. ठीक है, तो ये दोनों चीजों के अंदर आ जाते हैं. So it is a part of aptitude and लॉजिकल रीजनिंग है, आप विजुअल रीजनिंग बोल सकते हो, वर्बल रीजनिंग बोल सकते हो, तो ये दोनों के अंदर आता है. दीज आर बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा. बुलियन अलजेब्रा के साथ ज्यादा सॉल्व किए जाते हैं एंड उस टॉपिक को काफी ज्यादा कवर करते हैं वेन डायग्राम्स. राइट, सो वी आर लुकिंग इनटू सम ऑफ द विजुअल एग्जांपल्स और आज भी हम एक दो एग्जांपल उसे करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, बहुत ज्यादा पूछा जाता है. सो लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर. ये लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे क्वेश्चन उसके जैसा ही कुछ है. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर. B. That's correct. B will be the correct answer over here. So I won't be wasting much of the time because ये तो आप देखकर समझ सकते हो क्या होगा. So author, lawyer and singer, these three are totally different or you can say distinct professions. We have three distinct professions. तीनों अलग अलग professions है जिनका आपस में कुछ लेना देना है नहीं. ठीक है, so they will be represented by three different circles. One will be representing author, second will be representing lawyer and a singer. Okay. So best solution is the B one. Second. Let's see the next one. Yes, this is a good question. I want you to read it thoroughly and then we'll try to solve this one. So question के अंदर क्या दिया हुआ है? I'll just help you in reading this. So basically there is a town with 500 people. पहली चीज दी हुई है. The total of 500 people. 285 people they read Hindu. Right, so 285 people read Hindu. Pehla condition. 212 people they read Indian Express. Read Indian Express. 127 people they read Times of India. 127 reads Times of India. अच्छा, ये तो टोटल हमें दे दिया है कि टोटल इतने लोग हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं. Now secondly, another data has been given. The data talks about 20 people who reads Hindu and Times of India. ये कंडीशन है. So हिंदू और टाइम्स इंडिया दोनों पढ़ने वाले 20 people है. And 29 people read Hindu and Indian Express. Indian Express और हिंदू पढ़ने वाले दिए हुए. And 35 people they read Times of India and Indian Express. ठीक है, ये दे दिया. इसके अलावा there is one more condition which is given over here that 50 read no newspaper. 500 में से 50 तो कुछ पढ़ते ही नहीं. Now you need to determine how many read only one paper. सिर्फ एक पढ़ने वाले कितने. So I'll give you I'll give you 2 minutes to try this one, solve this one, then we'll talk about कि कैसे इसको solve करना.
Okay, let's see how we can solve this question. So in a town of 500 people, so जो universal set आपको दिया हुआ है that is of 500 people, right? I'll try to draw the Venn diagram over here. बाकी इसको आप Venn diagram के बिना भी कर सकते हो. There is no big deal. Right, let's have these three colors so that it will be easy for us to identify. So ये हमारा हो गया हिंदू के लिए कलर. हिंदू वाले I am noting that set by H. इसके अंदर मेरे पास टोटल ऑफ H के कितने हैं 285. Then I have another one. Let's say ये इंडियन एक्सप्रेस का हो गया. आई एम नोटिंग इंडियन एक्सप्रेस बाय आई. आई है मेरे पास 212. थर्ड वन इज टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया की मेरे पास टोटल 127. ये तीन मुझे दे दी. इसके अलावा मुझे थोड़ी कंडीशंस और दी हुई है. जैसे कि कंडीशन दी हुई है हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया. सो हिंदू इंटरसेक्शन टाइम्स ऑफ इंडिया is 20. Then Hindu intersection Indian Express is equals to 29. And times of India intersection Indian Express is equals to 35. Okay. So let's try to name this all things so that it will get easier. So जहाँ पर भी मैं कोई अल्फाबेट लिखूंगा this will mean कि ये जो बाउंड्री है ना that boundary इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो अल्फाबेट को डिनोट कर रही है. फॉर एग्जांपल A अगर मैं बोल रहा हूँ राइट. सो A is only for this portion. जहां तक बाउंड्री मेरे पास आ रही है इसके बाहर के लिए नहीं है. ठीक है. तो इवन एच की बाउंड्री है ना वहां तक आ रही है. इवन ये जो एच का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना आई के साथ और टी के साथ उसमें भी ए एप्लीकेबल नहीं होगा राइट. जैसे हम लास्ट क्लास में देख रहे थे. सो आई विल बी यूजिंग दिस नॉर्म्स ओवर हियर सो दैट डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर. तो ए वाला पोर्शन मेरा इतना हो गया. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर द अदर पोर्शन. ये हो गया बी सी. ओके बी इसको लेते हैं सी इसको लेते हैं. Let's keep it D, E. This is E, this is F, and बीच में G आ जाएगा. और एक H में ले रहा हूँ बाहर जो मेरे पास डायरेक्टली नंबर दिया हुआ है 50. ठीक है. We need to identify how many read only one paper. So basically यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो we need to identify A plus B plus C. ठीक है. ये मुझे निकालना है. अगर मैं H की बात करता हूँ H में मुझे क्या दिया हुआ है. ये मुझे दिया हुआ है A प्लस डी प्लस जी प्लस ई. दिया हुआ मुझे. आई की अगर मैं बात करता हूँ सो आई में मुझे क्या दिया हुआ है सी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई. ठीक है. एंड टी की अगर मैं बात करूँ तो टी में दिया हुआ है बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी. एच इंटरसेक्शन टी अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे दिया हुआ है डी प्लस जी. ठीक. एच इंटरसेक्शन डी. एच इंटरसेक्शन आई की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिया हुआ है ई प्लस जी. एंड टी इंटरसेक्शन आई की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिया हुआ है जी प्लस एफ. ये मुझे दिया हुआ है. एंड एच की वैल्यू मुझे दी हुई है. एच की वैल्यू मुझे डायरेक्टली दी हुई है 50. जो कुछ भी नहीं कर रहे. एंड टोटल मुझे दिया हुआ है 500. ठीक है 500 दिया. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि the people who read only Hindu. Let's start from only Hindu. The people who read only Hindu. कितने मेरे पास. सो बेसिकली दैट इज ए. ठीक है. तो ए मेरे पास है. अब ए अगर मुझे निकालना है सो हाउ आई कैन फाइंड आउट ए. तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही चीज है अगर देखा जाए तो दैट इज अननोन. कौन सी है वो जी. राइट. जी मेरे पास अननोन है. सो चलो बात करते हैं इसकी कि हिंदू के लिए कितने नंबर मेरे पास नंबर होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोटल ऑफ 285 पीपल. ठीक है. 285 पीपल हैं जो भी हिंदू पढ़ रहे हैं. उसमें से अगर मैं हिंदू और आई दैट इज इंडियन एक्सप्रेस उसके अगर कॉमन वाले निकाल लूं सो इट विल बी माइनस ई प्लस जी. ठीक है.
एंड अगर ये सिंपली अगर मैं बात करूँ तो इट इज इस 285 माइनस e plus g plus b. It has been given e plus g plus b. अच्छा, नाउ आई हैव eg की वैल्यू मेरे पास है एंड gb की वैल्यू मेरे पास है, राइट? e plus g की वैल्यू मेरे पास है, g plus g की वैल्यू मेरे पास है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड एंड सबट्रैक्ट g ओवर दिस इक्वेशन. देखो मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं बाकी सबके लिए नहीं करूंगा इन डिटेल. सो बेसिकली क्या किया हमने यहाँ पर 285 माइनस e plus g plus b plus g. मैं g एक एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ, ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है, तो मैंने वो सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, अभी सब्ट्रैक्ट करने का मेरे पास क्या बचेगा? 285 माइनस e प्लस जी की वैल्यू मेरे पास है. इफ यू सी यहाँ पर मेरे को वैल्यू दी हुई है e प्लस जी इज 29. सो मैंने 29 सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस d प्लस जी है, d प्लस जी इज इट्स 20. ठीक है, d प्लस जी भी मेरे पास है, इट इज 20, सो 20 भी है, माइनस जी. ठीक है, ये मेरे पास हो गया. और 285 minus 49 plus g. This will be the final answer. So it will become 285 plus 40. Sorry, minus 49 plus g. Can you tell me what will be the answer over here? G is still unknown. G is the only thing which is unknown. 236. Very good. 236 plus g. Right. So I'll erase this entire point. Just for your explanation. क्या किया हमने? Can you do the same thing for other parts also? For example, Yes, sir. if I want to find out what about only times of India, times of India will be only b. only b मतलब मुझे क्या है, मुझे b तो दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है b g d f. so मैं b g d f जो है टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैट इज 127 मुझे दिया हुआ है. इसमें से मुझे तीन चीजें माइनस करनी है, दैट इज d प्लस f प्लस g. अब देखो d प्लस g भी दिया हुआ है, f प्लस g भी दिया हुआ है, so दो बार दिया हुआ है. अगेन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग g, to add and subtract g. So यहाँ पर जो हो जाएगा that will become 127 minus d plus g is 20, f plus g is 35 minus g, which will become 127 minus 55 plus g. Yes. — 72 minus g. It's सर g माइनस नहीं होगा, प्लस तो हमने किया ना. प्लस किया माइनस किया, लेकिन माइनस माइनस अगेन जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके ओके सर. So this will become 72 plus g. And the third one, only Indian Express. अगर आप ओनली इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहे हो, सो दिस विल बिकम सी. सी की जो वैल्यू है वो भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से. सो इट इज 212 माइनस ई प्लस जी प्लस एफ. सो अगेन द सेम थिंग, 212 माइनस ई प्लस जी दिया हुआ है हमें, दैट इज 29, एफ प्लस जी दिया हुआ है 35 माइनस जी. बिकम 212 माइनस 29 plus 35, 64 plus g. So what will be the answer? 140 is 140 48. 148 plus g. Okay, so I got this part. Now I'll compare it with what has been given to my in my question. Okay, so मैं क्या करूँगा? I'll try to add everything. I'll
try to add everything, जिसमें सिर्फ एक g unknown है, बाकी सब वैल्यूज ऑलमोस्ट मुझे पता है, सिर्फ एक g unknown है, तो g को हम unknown रखेंगे, बाकी सबको हम ऐड करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू योर 5, दिस शुड बी इक्वल टू योर 500, राइट। सो एक चीज अननोन है क्या, g, बाकी सब नोन है, सो यू शुड गेट द फाइनल आंसर, g की वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। एक बार g की वैल्यू आ जाती है, यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट आई हैव इज 500 and 500 is equals to a plus b plus c, that is 236 plus g plus 72 plus g plus 148 plus g plus, अब इसमें ये तो a b c वाले आ गए, मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो मुझे वैल्यू दी हुई है दैट इज हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर एच और एच इंटरसेक्शन डी की बात करो, सो दिस विल बी डी नॉट डी प्लस जी, ये मेरी मिस्टेक है, सो दिस विल चेंज द एंटायर क्वेश्चन, मेरा मिस्टेक हो गई है, बस यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात भी की हुई कि तीनों का इंटरसेक्शन भी होगा, तो उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, सो आई कैन नॉट कंसीडर इट एज ऑफ नाउ, सो आई जस्ट करेक्ट इट, यहाँ पर ये तीन चीजें जो होंगी ना, ये चीज why I got to know this part is because यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर आपकी जो g की वैल्यू हो जाएगी ना, वो नेगेटिव में आएगी, which is not possible, कि आप इन तीनों को सॉल्व करोगे, आपके पास और तीन इक्वेशन आएंगी, उन सबको जब टोटल करोगे तो 500 से ऊपर जाएगा, ठीक है, 500 से ऊपर जाएगा मतलब वो सामने जाके नेगेटिव हो जाएगा, सो विल गेट नेगेटिव वैल्यू ऑफ g, which is not actually possible। तो अगर आप h इंटरसेक्शन t की बात कर रहे हैं, h इंटरसेक्शन t की, तो यहाँ पर सिर्फ d आएगा आपके पास, तो ये दो कॉमन है, जो सिर्फ दो को पढ़ रहे हैं, तो तीसरे को नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो g यहाँ पर नहीं है। Similarly, H intersection I will be E and T intersection I will be F, ठीक है, और H की वैल्यू दी गई, so D E F दिया हुआ है, H दिया हुआ है, ठीक है। I'll just erase this part only, तो यहाँ पर ये सब चीजें वैल्यू चाहिए। तो let's continue with this one। ओनली हिंदू की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ ए कौन से होंगे, so 285 हो गया, माइनस मेरे पास तीन चीजें हैं, डी प्लस जी प्लस ई, तो इसमें से डी और ई की वैल्यू दी हुई, ठीक है, सो कम 285 माइनस डी प्लस ई हो जाएंगे आपके पास 49 प्लस जी, जी नहीं दिया हुआ, 285 माइनस 49, तो जैसे हमने इससे पहले किया हुआ था, इट विल बी सेम, इट विल बी 236, लेकिन यहाँ पर जो जी है ना वो नेगेटिव में है, सो दिस विल मेक द चेंज, जो हमारा पॉजिटिव में आ रहा था वो यहाँ पर नेगेटिव में आएगा। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करता हूँ, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात होगी, सो 127 माइनस इट विल बी डी प्लस जी प्लस एफ, ये आपको वेन डायग्राम से मिल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग, जो डी के अलावा जितनी भी चीजें हैं उन सबको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दिस विल बिकम 127 माइनस डी की वैल्यू है और एफ की वैल्यू है, दैट इज 20 एंड 35 हैज बीन गिवन, so 20 और 35 will become 55 plus g, again 127 minus 55 will become 70 minus g, second equation। Coming back to the third one, only Indian express, यानी कि c की अगर हम बात करें, c will be equal to यहाँ पर दिया हुआ है 212 माइनस, अगेन फिगर अगर आप ध्यान दो फिगर में इंडियन एक्सप्रेस में, तो सी में से आपको ई जी एफ माइनस करना पड़ेगा सी निकालने के लिए, सो ई प्लस जी प्लस एफ, 212 माइनस सी और एफ दिया हुआ, ई और एफ दिया हुआ, 29 और 35 64 हो जाएगा, प्लस 212 माइनस 64 148 जो हमने देखा था, ये तीन इक्वेशन आ गई है मेरे पास। Now what I'll do is सबको ऐड कर देते हैं, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f g प्लस h, टोटल हो जाएंगे हमारे पास कितने होने चाहिए, 500 के बराबर होने चाहिए, सबकी वैल्यू हमने निकाल ली, so this will become 236 minus g plus
72 minus g plus 148 minus g प्लस b की वैल्यू है 20, e की वैल्यू है 29, f की वैल्यू है 35, g की वैल्यू हमको वैसे भी नहीं पता है, h की वैल्यू है 50 इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये एज पर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। नाउ फ्रॉम हियर यू नीड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ g। इफ यू कैन डू दिस लेट मी नो द आंसर। Solve for g this equation। 45।45 is the correct answer. And 45 are those people, those who are reading all the three newspapers, right? Indian Express, Hindu and Times of India. तीनों को पढ़ रहे हैं वो वाले लोग हैं हमारे पास 45. But I'm more interested in finding out those who are reading only one. So वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, वो मैंने already निकाल दिए हैं, just I need to subtract it. So जो मेरे पास जो मेरे को निकालना है बेटा, right? Only one newspaper वाला. That will be equal to 236 minus 45 plus 72 minus 45 plus 148 minus 45. So solve this one and tell me what is the final answer we are getting. 321 D। That's correct. 321. Question is pretty simple. खाली lengthy process है, ये काफी lengthy process है, थोड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा lengthy process है. And you need to understand the question. अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे जैसी गलती करोगे जो मैंने यहाँ पर कर ली थी थोड़ी देर पहले. That is the only hack over here. And let's move on to the next one. Yes, it is quite similar to previous ones, पिछले वाले के जैसे ही, लेकिन उससे easy है, काफी easy है. So try to solve this one.
Let's see how this question can be solved. Main Street High School has 10 members on its football team. 14 sir, B. Let's see what is the answer. So 14 members on its science club. So football club है और science club है, दोनों के members दिए हुए हैं. 5 members at the school belong to both the football and science teams. How many students belong to only science club team or the football team? दोनों में से सिर्फ एक ही निकालना है, ठीक है? Let's draw it. It will be easier to solve this question by drawing. Okay, so these are, let's say this is the football team and this is the science team. Okay, we have A, B and C is the portion which is common. So हमें निकालना क्या है यहाँ पर? हमें basically निकालना है belong to only science और football. So A plus B हमें निकालना है, ठीक है? Now the main C has 10 members on its football team. Football team के बारे में दिया हुआ है, F के बारे में दिया हुआ है, 10 members है, यानी कि A plus B, A plus C is 10. ठीक है? Also science club के बारे में दिया हुआ है कि 14 members हैं. So B plus C दिया हुआ है, it is 40. ठीक है? And 5 members belong to both of the teams. So C की वैल्यू दी हुई है 5. ठीक है? तो A की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. So A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 minus 5 यानी कि 5. And B की वैल्यू भी आ जाएगी 14 minus 5 यानी कि 9. Right. So either belong only to science club or football team. ये हो जाएगा हमारे पास 9 plus 5 यानी कि 14. So 14 is the correct answer. Let's move forward. So ये जो थे, these were some of the questions which belong to Venn diagrams. Now we'll start with the next topic of the series, that is surds, indices and logs. Surds, indices and logs, logarithms. Let's talk about a little bit of theory, then we'll start with the numericals. क्या होता है surds, कैसे काम करते हैं? So what are surds? First of all, let's try to understand. So surds are basically the irrational numbers. These are the irrational numbers which are represented in the form of nth root of x. nth root of x. ठीक है, हमेशा ये nth रूट में दिए गए. इरेशनल नंबर क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली डिफाइंड. फॉर एग्जांपल अगर आप रूट 4 की बात करें, रूट 4 इज डिफाइंड, इट इज 2, इट इज रैशनल. बट रूट 5 we don't know, it is not a rational number, rather than it is an irrational number. ठीक है? So there are multiple properties which pertain to this kind of irrational numbers. So उनकी बात कर लेते हैं. सबसे पहली और कॉमन प्रॉपर्टी होती है that what happens to if I have x, a number x, उसका अगर मैं nth रूट ले रहा हूँ और if I raise it to power n again, so जो nth रूट होता है इसको हम लिख सकते हैं x raised to the power 1 by n. 1 by n. तो जो भी nth रूट होता है उसको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. सो यहाँ पर भी जैसे nth रूट है, ये इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज x raised to the power 1 by n. तो यहाँ पर भी nth रूट इज रिप्रेजेंटेड एज 1 by n raised to the power n. और जब भी दो पावर, एक के ऊपर दूसरी पावर होती है, सो दे नेवर गेट्स एडेड अप. यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, ऐड नहीं होती है, मल्टीप्लाई होती है. दिस विल गेट कैंसिल्ड अप एंड यू विल गेट x. ठीक है? सो कहने का मतलब क्या है? रूट ऑफ 4 raised to 2, this will be equal to, अगर आप सॉल्व करना चाहो, you get the answer equal to 4 only. तो जो अंदर होगा वही आपका, जो रूट के अंदर होगा वही आपका आंसर है. Let's see the next property. The next property says that if you have two numbers x multiplied by y and this multiplication is raised to nth root, so this is equivalent to nth root of each of the numbers when they are multiplied. ये हो जाएगा nth root of x multiplied by nth root of y. Same thing happens in division as well. So x by y कोई नंबर है, उसका अगर आप nth root निकाल रहे हो,
this is equal to nth root of x divided by nth root of y. Okay. Let's see the next one. So let's say you have a number x. So कोई एक रूट है, let's say a, उसके ऊपर दूसरा एक रूट लगा देता हूँ मैं, रूट b, उसके ऊपर तीसरा रूट लगा देता हूँ, रूट c। ऐसे तीन रूट है उसमें। सो बेसिकली ये जो रूट होते हैं ये और कुछ नहीं होता, एक के ऊपर एक दूसरा रूट होता है, तो दे गेट्स मल्टीप्लाइड, दे गेट मल्टीप्लाइड, सो इट बिकम्स abc रूट ऑफ x। ठीक है, ये कहाँ से आता है, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट ये कैसे होता है। सो जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होगा दैट कैन बी रिटन एज x into 1/a, उसके ऊपर वाला जो होगा वो लिखा जाएगा 1/b, बिकॉज वो एक दूसरे के ऊपर है तो दे गेट मल्टीप्लाइड, राइट। सो इट विल बी काइंड ऑफ दिस 1/c। ऐसे तीनों होंगे, और ये ब्रैकेट के ऊपर पावर आ रही है, सो दे विल गेट मल्टीप्लाइड, विल गेट x raised to the power abc। तो ये इसके बराबर होता है, और इट इज इक्वल टू abc मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आता है उसका रूट यहाँ पर निकाल सकते हैं। So and another thing, another part that is let's say there is a number x, इसका nth रूट है, और इसको हम किसी दूसरे पावर पे रेज करते हैं, m पावर पे रेज करते हैं। This is equivalent to raising the power of x to m and taking n। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है रूट का, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इट विल बी सेम आंसर। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 raised to square, right? It will be equivalent to 64 square का cube। You can try this one at your place and get the answer। Okay. Let's look into some more properties। So surds are basically those irrational numbers जो root के form में होते हैं, उनको हम surds बोलते हैं। Now let's talk about the second part, that is indices। What do we mean by indices? Let's talk about that। Indices is the plural form of index, okay, or index represents the power। So a surd which is represented in x raised to n form is known as indices। अच्छा, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज आप में से बहुत लोगों को पता होगी ऑलरेडी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। x raised to m into x raised to n, अगर बेस सेम है, याद रखना, अगर बेस सेम है यानी कि x दोनों में है, देन ओनली द पावर गेट्स एडेड अप। लास्ट केस में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर ऐड कर रहे थे, यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए पावर ऐड होती है। सो इफ द बेस इज सेम एंड दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, देन द पावर गेट्स एडेड अप। सिमिलरली अगर यहाँ पर डिवीजन में होता है, सो x raised to m upon x raised to n आता है और बेस सेम है, so they will get subtracted। ठीक है, हाँ वहीं पे अगर आप बात करो इसकी कि x raised to m है और इसकी होल पावर जो होगी वो n के बराबर होती है, तो जब ब्रैकेट के ऊपर पावर आ रही है देन दिस पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। so ये जो दोनों चीजें हैं दीज आर कंफ्यूजिंग अलॉट। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि कब ऐड होती है पावर और कब मल्टीप्लाई होती है। Similarly, there, let's say there are two numbers x multiplied by y और इसकी पावर में n कर रहा हूँ, so it is equivalent to x raised to n multiplied by y raised to n। एक और important property, let's say there is a number x जिसकी mth पावर उसकी nth पावर के बराबर, ठीक है। so उसकी m पावर अगर मैं x raised to m करता हूँ, this is equivalent to x raised to n। this is only possible in one condition, क्या कि m is equal to n, provided x is not equal to 1। obviously x अगर 1 हो जाएगा तो फिर ये चीज सेम हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी पावर 1 मतलब 1 और 1 से ऊपर होना चाहिए, x should be greater than equal to 1 and greater than, ये जीरो के लिए भी नहीं है, और इनफैक्ट माइनस के लिए भी हो जाएगा। X
mod of x is greater than 1. Next, yes. What if the power is in negative? What is the power is in negative? So इस case में हमेशा reciprocal system है. If someone just tells you that ये 2 raised to minus 1 है, so it is 1 by 2. So जब भी power negative में होती है, that basically means reciprocal. And yes, सबसे important, x raised to 0 is always equal to 1 for all values of x. x की कोई भी वैल्यू ले लो, raised to the power 0 is 1. In fact, 0 raised to 0 is also 1. So the 0 से power 0 होती है तो भी वो 1 के बराबर ही होता है. This was about indices, some properties. Now let's see the third part of this topic, that is logarithm. Logarithm. If we are getting higher numbers, सभी हम कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कोई हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, we go to higher numbers. It's quite difficult to represent on the using this number line. उस केस में we use logarithms. Right, so logarithm will make your numbers or the list of numbers go lower. Okay, so it is given like this: if a raised to x equals to b, कोई भी एक नंबर है जिसकी पावर x है, this equals to b, then log of b to the base a is equals to x. देखो जब हमने log लिया तो log क्या बता रहा है? पावर बता रहा है. किसकी पावर बता रहा है कि भाई जब हम जो बेस है उसकी पावर हम x करेंगे तो जाके मुझे b मिलेगा. ठीक है, तो जाके मुझे b मिलेगा. दिस इज हाउ द log is represented. In simple words, if I want to write it down, it will be exponent to which the base should be raised. To produce the number. तो बेस की कौन सी पावर पे हम पहुंचेंगे तो जाके मुझे ये नंबर मिलेगा, वो लॉग आपको बता रहा हूँ. ठीक है, दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लॉग. हाउ डू वी डिफाइन लॉग? चलो अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है. सो प्रॉपर्टीज आई गेस आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई होंगी कहीं ना कहीं पे. सो इट विल बी जस्ट अ रिवीजन फॉर यू. सो टू द बेस x, अगर लॉग मेरे पास दो नंबर है विच आर एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड डिवीजन. सो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. उसको हम सेपरेट करने जाएंगे, सो दे विल गेट एडेड. सो लॉग a एंड लॉग b, इन दोनों का एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली अगर ये डिवीजन होता है तो इट गेट्स डिवाइडेड अप, तो माइनस हो जाएगा. लॉग a माइनस लॉग b. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम बहुत बार यूज करते हैं. लेट्स से सम बेस के साथ लॉग दिया हुआ मुझे एंड जो नंबर दिया हुआ है a, इट इज हैविंग सम पावर b. इस पावर को हम क्या कर सकते हैं? हम लॉग के आगे लिख सकते हैं एज सिंपल नंबर. सो दिस विल बिकम b इक्वल टू log b log a टू द बेस x. ठीक है, इसके बराबर. तो जो भी पावर होती है अंदर वाले नंबर पे, इट विल कम एज अ नंबर इन फ्रंट ऑफ द लॉग. एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कभी ना कभी यूज करेंगे आगे, एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल तो इसका हम करेंगे. सो अगर अब यहाँ पर मुझे बेस चेंज करना है, सो अभी यहाँ पर बात हो रही है किसकी? बेस क्या है? लॉग एक्स है, बेस एक्स. ठीक है, लॉग ए टू बेस एक्स. अगर मुझे इसका बेस चेंज करना है, आई नीड टू चेंज इट टू सम अदर बेस. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, लेट्स से मैं इसको nth बेस पे लेके जा रहा हूँ. nth बेस ऑफ लॉग ए डिवाइडेड बाय nth बेस ऑफ एक्स, एज सिंपल एज. तो जो नया बेस है उससे मुझे उसका जो x वाला बेस है, जो ओरिजिनल बेस था, उससे डिवाइड करना है. आई गेट द न्यू नंबर. इसको और अच्छी तरह समझते हैं, कि है क्या. सो लेट्स से मेरे पास log 10 है टू द बेस 2. log 10 है टू द बेस 2. अच्छा, log 10 टू द बेस 2, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इन अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में ये चीज निकालनी डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि log हमारे पास दो ही होते हैं, या तो नेचुरल log दिया होगा आपको या log टू द बेस 10 दिया हुआ होता है. So what we'll try to do is we'll try to convert it into log 10 ताकि मैं उसको कैलकुलेटर पे यूज कर सकूं. देखो x जो था, x is 2 over here.
a की वैल्यू हो जाएगी 10, मुझे n जो चाहिए, n जो मेरे को नया बेस चाहिए, दैट इज 10, मुझे 10 के बेस में अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ, सो log टू द बेस 10, किसका करना है, a का, a क्या था 10, सो log 10 टू द बेस 10 विल बी इक्वल टू 1 इटसेल्फ। और यहाँ पर मुझे एक और चीज निकालनी है, log टू द बेस 10, इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x क्या था, पहले मेरा बेस जो था वो था 2, मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है, log 2 टू द बेस 10, और आई कैन ऑब्टेन, इट विल बी इक्वल टू दिस log 10 टू द बेस 2। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, इफ पॉसिबल हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। द नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज log a to base x is equivalent to 1 by log x to the base a। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये जो अगर बेस और नंबर इंटरचेंज होते हैं, so you get the same number, कहने का मतलब ऐसा है, देखो अगर if I get log a to the base x, if I multiply it with log x to the base a, this is equal to 1, इसका जो प्रोडक्ट होगा that is equivalent to 1। then the next is log 1 to any of the base is always equal to 0 for x belongs to all natural numbers, this is applicable for all natural numbers। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है समझना, कौन सी पावर पे चढ़ाया जाए, किसी भी नंबर की कौन सी पावर पे चढ़ाया जाए ताकि मुझे 1 मिल जाए, तो 1 कब मिलेगा हमें, when it is raised to 0, 100 raised to 0 करोगे तो भी मुझे 1 मिलने वाला है, so if it is raised to 0 then we'll get 1। तो यहाँ से log 1 की वैल्यू हमेशा के लिए 0 हो जाती है फॉर एनी वैल्यू, लेट्स याद रखना फॉर एनी वैल्यू। There's one more thing that we'll do over here, that is x, if it raised to power log of a to the base x, this is simply equal to a, x की पावर में जब भी log आता है तो it is simply equal to the number itself, जो log के पीछे जो नंबर दिया होता है उसके बराबर है, ठीक, प्रोवाइडेड जो नंबर आगे है जिसकी पावर रेज की जा रही है और बेस जो है वो सेम हो जाए। These are certain properties of log. Now give me 1 minute, I'll be sharing my screen once again. We'll do some numericals related to this. So this is what we have seen, surds, indices and logs, now let's start with some of the simple numericals and try to solve this one। Okay, I got one answer in the chat box. -1/2. Let's see what is the answer.
So we have to simplify this one. Simplify करना है, basically we need to find out the value of x. So we have to find out 4 2x minus 1. अच्छा डॉट दिया हुआ है, that basically means multiplication जो सामने जाके division हो जाएगा, so it will become 1/16. ठीक है. अब यहाँ पर what I'll do is to simplify this one, I'll just change this to base 4. इसका base 4 करना होगा, ये मैं लिख सकता हूँ it is 4 square, और इसको ऊपर लेके आना होगा तो it will become minus. So 4 raised to the power 2x minus 1 equals to 4 raised to the power minus 2. ये मेरे पास आ गया. Now since the base are same, ये हमने देखा था, तो the exponents or the power will also be same. यहाँ से मुझे मिल जाता है 2x minus 1 equals to minus 2, और 2x will be equal to minus 2 plus 1, this is minus 1. 2x equals to minus 1 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी minus 1 by. This will be your final answer. And the simplest way to solve this kind of question. Let's see the next one. Simplify this one. One. X is equal to 1. Let's see. So क्या दिया हुआ है मुझे 3 raised to the power 3x plus 1 and 81 दिया हुआ है. So we know that it is 3 raised to 4. Right? 3 into 3 9 into 3 27 into 3 18. 3 raised to 4 है. तो यहाँ से पावर जो हो जाएगी that will be 3x plus 1 equals to 4 और 3x will be equal to 3 और x will be equal to 1. Simple है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर. Just for your like just for covering the topic. This is a good question. I want you to try this without using calculator, obviously. Question. I'll tell you the procedure कैसे करते हैं इसमें. So जो मेरी पावर है, like इसको मैं simply ऐसे represent कर सकता हूँ. This is 3 raised to the power 1 by 3 and this is 5 raised to the power 1 by 5. So जो भी मेरी पावर है जो यहाँ पर आ रही है, I have 3 and 5. So I'll try to find out the LCM of 3 and 5, which becomes 15. Right, so these two equations I'll raise them to the power 15. So 3 raised to the power 1 by 3 raised to the power 15. This is the first number I need to compare. 5 raised to the power 1 by 5 raised to the power 15. ठीक. अब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ जो 3 है ये 15 को कैंसिल करेगा, so I'll get 3 raised to the power 5 and ये जो है ये 5 52 कैंसिल करेगा, 5 raised to 3. Now I need to compare these two numbers. इनको कंपेयर करना it is quite easy, right? So ये हो जाएगा मेरे पास 243. 3 raised to 4 is 81. 81 into 3 is 243. And 5 raised to power 3. So 5 5 is 25. 5 is 125. So obviously this is going to be greater, which gives the third root of 3 is going to be greater than the fifth root of. Simple procedure है, the only thing is LCM वाला है. Try to solve this one with the same method. Question. Okay, so we have 2 and 3 as power over here. So we'll raise them to the power of 2 and LCM of 2 and 3. So LCM of 2 and 3 is 6. So raise this
3 raised to the power 1 by 2 to the power 6, and 4 raised to the power 1 by 3 to the power 6 should become 3 raised to 3 and 4 raised to 2. 3 raised to 3 is 27 and 4 raised to 2 is 16. So obviously 27 is greater than 16, which gives the square root of 3 is greater than the cube root of 4. Simple method, you can do it. Try this one. This will take a little bit of time. Try to solve this one. There is something missing in this question. This is not plus. Sorry. This is not plus. This is equal. Now solve this one. Twelve by 5. Okay. Let's see what will be the answer. So क्या दिया हुआ है 2 raised to the power x minus 4. This is equals to 1 by 16 raised to the power x minus 2. Let's take it to the numerator. तो power minus में हो जाएगी. So we'll get 16 raised to the power minus x minus 2. ठीक है. और 16 को अगर मैं 2 के टर्म्स में लेकर आता हूँ, because I need to make the base same. ठीक है. तो ही मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ. So I can say 2 raised to the power 4 is 16. Become minus 4 times x minus 2. Now that the power base is same, base अगर मेरे पास same है, so the power is going to be same. This will give me x minus 4 equals to minus 4 x minus 2, or x minus 4 equals to minus 4x plus 8, which will give me x plus 4x is equal to 8 plus 4. So this will give me 5x is equals to 12, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12 by 5. I hope it's clear. Simple है क्वेश्चन, और कुछ नहीं, just you need to make this step. ठीक है. जो हमने आगे लिखा था that x raised to n equals to x raised to n implies that the base is same. This is showing that the power is going to be same. And this is ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं. Solve this one. One by 3. Let's see what's the correct answer. So third root of 16 has been given. So 16 raised to the power 1 by 3 has been given, and it is equal to 4 raised to the power 2x. So नीचे 4 लेकर आना पड़ेगा. So this will become 4 square raised to the power 1 by 3 equals to 4 raised to the power 2x. और 4 power multiply होगी, it will become 2 by 3. So 4 raised to the power 2x. 2 by 3 is equals to 4 raised to the power 2x. ये हो गया. Now power will be same. So this will give you 2 by 3 is equals to 2x, or x equals to 1 by 3. Try to solve this one. Solve क्या करना है? You need to know how this can be done.
3. Yes, that's the correct one. So, logarithm of 64 to the base 4. देखो इसको करने का सिंपल दो तरीके हैं, I'll tell you both. So first thing is, since आपको बेस को कौन सी पावर में लेके जाओगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, राइट? So the power to which base must be raised. To get the number. Simple. So the base is 4. The 4 should be raised to 3. Then only you will get 64. So 3 will be the correct answer. एक तरीका हो गया. Second method that is more technical and that will look easier for to you is हमको निकालना क्या है? Let's see. हमको निकालना है log of 64 to the base 4. हमको ये निकालना है. अच्छा, what I'll try to do is I'll try to make this 64. I'll try to make this 64 in the terms of base, यानी कि 4 के टर्म्स में लेकर आता हूँ. So I can say that 4 raised to the power 3 is 64. अच्छा, मैंने ये लिखा था आगे हमने कि there is any power, अगर आगे कुछ भी पावर होती है, so this will come in front of log. So ये हो जाएगा आपके पास 3 log 4 base to 4. ठीक है. अच्छा, log 4 to base 4 is 1. So this will become 3 into 1, which is equal to 3. ठीक है. So ये भी एक चीज है कि log x to base x equals to 1. ठीक है, जो हमने log 10 के लिए देखा था. log 10 to the base 10 is 1. ठीक है. ये 3 आंसर आपके पास ऐसे आते हैं. In any case, you can solve this one. The more we are more concerned about the answer over. Try to solve this one. This is also interesting. So 729. Sorry, what is the answer? 729. That's correct. ठीक है, इसको समझते हैं कैसे करना है इसको. So basically क्या दिया हुआ है हमें? I'll try to understand it in such a way that log a or so like log b to the base a is what हमें ये निकालना है. अगर ये निकालना हो, so what power a must be raised to get b. ठीक है. तो लेट्स से ये हमें x पावर पे ले जा रहा है. तो ये मुझे बताता है क्या कि a raised to x is going to be equal to b. ठीक है, सिंपल सी बात यही है. अब बस इसी चीज को अगर हम समझ लेते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो x मेरा कुछ और हो जाएगा. यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा b की जगह मेरा x आ जाएगा जो मुझे निकालना है. a की जगह मेरे पास 3 दिया हुआ है एंड x की जगह मुझे दिया हुआ है 6. तो x is going to be 3 raised to power 6, which is nothing but 729. ठीक. ये सिंपल तरीका है इसको करने का. सो द बेस्ट वे टू डू इट. Solve this one.
64. So 128. Okay, let's see what is the answer. Okay, good. So let's see what is the answer. 4 raised to 3 plus log 4, sorry, log 2 to base 4. ये हमें निकालना. Now this can be split. ठीक है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं. दिस कैन बी स्प्लिटेड अप. सो अगर पावर एडिशन में है, बेसिकली जो बेस होगा वो मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो पावर एडिशन पॉसिबल. तो 4:3 तो एक जगह मैंने डाल दिया, दूसरी जगह मैं डाल देता हूँ log 2 टू बेस 4. ठीक है, सो ये मैंने निकाल दिया. अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि log 2 टू बेस 4 क्या है. ठीक है, सो log 2 टू बेस 4 विल बी इक्वल टू 1/2. 1/2 will be there. Why 1/2? This says that to what power 4 must be raised so that you get 2. So 4 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे, हाफ उसकी पावर करोगे, तभी आपको 2 मिलेगा, राइट. सो log 2 टू बेस 4 विल बी 1/2. ठीक है, तो हमारे पास ये तो आ गया क्या कि 4 का क्यूब, सो दैट विल बी 64, और दिस विल बी 1/2. 4:1/2 is 2, so 64 into 2 should become 128. ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है. जस्ट यू शुड नो द ट्रिक. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बिकॉज यहाँ पर जब log बेस्ड 4 आता है तो ये आप कैलसी से इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो यू नीड शुड नो अबाउट द लॉगरिथम, देन ओनली यू कैन solve this kind of questions. Okay, this is going to be the last हेलो question. सर, Yes. उसमें एक क्वेश्चन था. हाँ, यहाँ पर हम 4 को 2 लिख सकते हैं, 4 को और 4 को हम 2 लिख सकते हैं, और जो उसका स्क्वायर होगा उस 2 को हम जो 3 प्लस log 4 बेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वो एक लेंदी प्रोसेस हो तो जाएगा. पर तो आंसर 64 आ रहा है. वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो कैसे होगा, बट वैसे आंसर आ जाना चाहिए. सो बिकॉज यू विल गेट 2 raised to power 2. हाँ, तो 4 हो जाएगा, तो log 1 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर हो जाएगा 6. चलो मैं चेक करता हूँ वैसे, फिर मैं आपको बताता हूँ. मीनवाइल यू कैन डू द नेक्स्ट वन. तब तक आप ये ट्राई कीजिए, वो चेक करके बताता हूँ. ओके सर. 3. Okay, I'm getting multiple answers. So log 256 to base 4. So what power 4 should be raised to it so that we get 256? So 4 4s are 16, 4s are 64, 4s are 256. So 4 raised to 4 is 256. Right? So इसका आंसर 4 आ जाएगा. And what power should the 3 be raised to get 9? So this is 3 square. So 3 square is equals to 9. ठीक है, so यहाँ से हमें मिल जाएगा भाई log 256 to base 4 is 4, and log 9 base 3 is 2. So you have to find out 4 minus 2 simply, which will be equal to 2 will be your final answer. अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो एक बार देख लेते हैं. This one. नहीं सर, आंसर आ गया. Again. यस सर. Fine, we'll keep it up to here in this class. यहाँ तक हम रखेंगे. नेक्स्ट क्लास में थोड़े क्वेश्चंस करके देन we'll move on to the next topic जो डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में.
So if you have any doubt, you can ask or you are free to leave. Thank you. Thank you, sir.